So good morning students. Now you can see here the topic is the real depth and the apparent depth, right? So today in this video we are going to discuss about this both the depth. The real means the real depth. Suppose this is the depth of the water. So this depth is known as the real depth. Is it right? Let me write here real depth. And what is the apparent depth? Apparent means the assuming depth. So whenever we observe from the above the surface of the liquid, then we observe a point or any point which is supposed at the bottom of the water is little bit what? Little bit above the surface. It is not exactly on the place. Whenever we observe, why it is? So for that, just see, if a ray of light, if I take the two ray of light which is inserting in our eye, so one is straight, so this is the direction, another is with some angle. As usual, you know, this is angle of incident, then this is angle of refraction, because the light come from here, this refracted, you know, and they both are the part of your eye. Is it right? Now after that we can say our eye will never see in by refraction. Is it right? By bending or by changing the path, they never see. They always observe in a straight line. So if I make this is as a straight line, so this object or a point which is in the bottom of the liquid, is it right, is little bit come out at this point O dash. Is it right? So actually we are observing the object at O dash. Is it right? Yes. Now, this is the depth from the surface is known as the what? Apparent depth. So from here to here, this is what? Apparent depth. Let me write in a short form. It is AP, apparent depth. तो अब हमको ये find करना है इसमें. Clear? So for that, just see, these are the two straight line, है ना? If these are the two straight line, and if it is, for example, straight line में ये अगर R है, तो I think this is also R. So this become the 90 degree. Is it clear? And after that, if two straight line and this is the intersecting line, so if it is I, then this is also I. Is it clear? So let me compare and find the what solution. So dear student, just now we have already completed this one, right? Now look at here, the same thing I have written here. The ray comes from the what? Liquid, that means water to air. So when it is water to air, I think you always write, if the ray coming from the water to air, then refractive index of, definitely you say find air coming from, है ना, जैसे जहाँ से आता है उसी को ऊपर लिखते हैं हम लोग. So water to air. In this way, first angle is the incident, and after that the refraction. Okay, that's fine. But you know, we never find the refractive index of air. ये जो नीचे लिखा रहता है उसी को हम लोग फाइंड करते हैं. तो refractive index of air we never find. We are actually going to find the refractive index of water. So that means reversibility process लगाते हैं इसमें. So if I use this reversibility process, definitely I will write the refractive index is from air to water. उल्टा हो गया. तो उल्टा होने से the term is also opposite. Is it clear? First let me clear this. So this is a writing pattern. Writing pattern of the refractive index is very important. Now come from the beginning. So as I told, इस triangles में तुमको दिख रहा है यहाँ पे R है, ये 90 है, तो definitely theta is the R. So let me use sin R from this triangle and O dash P. Is it clear? This is the triangle. So sin R is equal to what is that? Perpendicular NP by hypotenuse PO dash. Written from this triangle is also right angle triangle. Here theta is the I incident. So according to this, this is 90. So here I will write perpendicular by hypotenuse, that is PO, which I have written, and I compare sin I by sin R or sin R by sin I, whatever. जिसमें compare करना कर सकते हो, कोई problem नहीं है. अब कंपेयर करना क्यों है? बिकॉज ये टर्म अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो मैंने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज एक्चुअली PO बाय PO डैश. व्हाई इट इज? बिकॉज साइन I बाय साइन R और साइन हियर I बाय R इज PO डैश बाय PO, व्हिच आई हैव रिटन, है ना. तो पहले तुमने ये फाइंड कर लिया कंपेयर करके, इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा. ये रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है जहां से लाइट जा रहा है. तुमको देखना है फेनोमेना क्या है. वाटर से एयर में जा रहा है, वाटर से एयर में लिखा. बट वी नेवर फाइंड फॉर एयर, हम लोग वाटर का निकालते हैं. तो वाटर का हमको, क्योंकि एयर का हमेशा 1 अप्रोक्सीमेटली, वी नेवर फाइंड फॉर वाटर. यहाँ पे जो तुम्हारा मीडियम है डेंसर, वो वाटर है, तो हम लोग वाटर का ही फाइंड करेंगे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर
इज इट राइट? पहले में मैंने बोल चुका हूँ कि जब विथ रेस्पेक्ट टू ईयर रहता है तो उसको लिखते भी नहीं है. सो दिस इज एक्चुअली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, विच इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, क्योंकि रिवर्स किया. अब ये आई बाई आर तुम यहाँ से निकाल लो कितना है, ये लिख लिया यहाँ पे. Now what happens here, since the both the ray is inside in your eye, दोनों तो तुम्हारा आँख में जा रहा है और आँख का aperture बहुत ही small होता है, negligible distance between the P and N. इसलिए मैंने बोला कि P is very close to N. So when it is very close to N, I can write in place of P as N. तो वही मैंने लिखा यहाँ पे P. I have written N. What is NO now? This is apparent depth. Sorry, my mistake. NO dash, it is apparent depth. And what is NO? NO is the real depth which you have written here. Clear? In this way we can find the value. Clear? So now look at here, this is another topic here, total internal reflection. ये दूसरा टॉपिक है. वैसे तो रिफ्लेक्शन इज नॉट इन आवर सिलेबस राइट, वो तुम्हारा ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुके हैं, बट फिर भी यह रिफ्लेक्शन जो है वो डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन. ये जो है रिफ्रैक्शन का पार्ट है, हाउ इट इज टेक्स प्लेस. सो व्हाट इज दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? दिस इज अ phenomenon, राइट? Definitely you know what is phenomenon. It is a phenomenon which takes place in the denser medium. Yes, जैसे तुम्हारा क्या होता है, प्रिज्म. प्रिज्म के अंदर ऐसा होता है. क्या होता है प्रिज्म के अंदर? प्रिज्म के अंदर ये रिफ्लेक्शन होता है. Is it right? If I'll take the diamond, is it right? Why the diamond is what so costly? It is due to the what we can say a simple language इसमें कि it is due to the reflection. What happened inside? The light is trapped inside the diamond, and that's why it's give us the brilliancies. Is it right? Why it give the brilliance? यानी कि वो चमक क्यों देता है? Because of the light trapping. अब ये लाइट ट्रैपिंग इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस. ये एक फेनोमेना है जो तुम्हारा बेंडिंग ऑफ लाइट तो डेफिनेटली होता है जब लाइट तुम्हारा कहाँ से कहाँ पास होता है. इट इज पासेस फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर, नंबर 1. नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल से ज्यादा होगा. अब तुम्हारे मन में घुस रहा है कि व्हाट इज क्रिटिकल. तो क्रिटिकल कुछ नहीं है, मैं पहले आता हूँ. क्रिटिकल एक लिमिटेड एंगल है जो हर एक डेंसर मीडियम का अलग अलग होता है. मतलब क्या मीडियम? नाउ लेट्स सी. फॉर एग्जांपल, critical angle of a glass is actually near about 42. You can note it, 42 43 के आसपास रहता है. Is it right? इससे ज़्यादा हो 42 लिख लो तुम, ठीक है ना. critical angle of glass is what? 42. So here let me take a glass for you. Is it right? And let me pass. This is a normal line as usual. तो मेरे को डेंसर से पास करना है, तो मैंने डेंसर से पास किया, राइट. एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. डेफिनेटली दिस इज द एंगल होगा. अब क्या हो रहा है इसमें? हियर कंडीशन इज कि इसका क्रिटिकल एंगल ऑलरेडी है. क्रिटिकल एंगल मींस एन एंगल व्हिच इज ऑलरेडी मेजर्ड. कब? मैं बाद में बताता हूं. सो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन द क्रिटिकल. सी फॉर क्रिटिकल, आई फॉर इंसिडेंट. So what happened here? We observe that it is refracted. Okay, no problem. If I take again the glass slab, is it right? This is the normal line. So this is the here angle of incident. Here we observe that जब मैंने इंसिडेंट को क्रिटिकल के बगल में लिया तो ये इंटरफेस से पास हो गया. मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हियर 90 डिग्री. Is it clear? So now, so if I'll ask you what is critical angle, so you can say critical is nothing, it is the angle of incident when angle of refraction is 90 degree. खत्म बात. यही है डेफिनेशन तुम्हारा क्रिटिकल का. Is it right? So after that here मैं और एक कंडीशन कर रहा हूँ, थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ. ये तो अभी तक लेस था, इक्वल हुआ. अब ये अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा? So when it is greater than the critical, we observe the light is trapped inside. फिर वो डेंसर मीडियम में घूम के आ जाता है with the same angle. इसी को अगर सेम एंगल में आ रहा है तो फिर डेफिनेटली हम इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट. इज इट राइट? एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आर इक्वल. रिफ्लेक्शन याद होगा तुमको, रिफ्लेक्शन क्लास 10 में तुमने पढ़ा था. जो अगर डेंसर से उसके डेंसर में आ जाए तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं. इसी का नाम दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.
इज इट क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल फेनोमेना. फिर से बताते हैं, इंसिडेंट कम होने से रिफ्रैक्ट होगा, इक्वल होने से 90 बनेगा और ग्रेटर होने से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा. है ना, ये एक फेनोमेना है जो प्रोड्यूस होता है बहुत सारे जगह में. तुम देख सकते हो रेनबो, तुम देखे हो गया ना, रेनबो क्यों बन आता है, रेनबो बनाता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से. सो तो पहला कंडीशन आती, क्रिटिकल एंगल लिखो इसमें. इज इट राइट? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? अभी अभी ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड व्हाट इज क्रिटिकल एंगल. इज इट क्लियर? So please write down this definition of the critical angle. Is it right? Already I have written here. Critical angle is the angle of what? Incident. Yes. जब ये बराबर हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा. So that's why I have written angle of incident है ये, जब angle of refraction 90 होगा. This is critical angle definition. Now after that there is a relation between the c and what? Here c is critical, not the speed of light. कभी कभी हम लोग confuse हो जाते हैं, but it is a critical angle. So critical angle और refractive index में क्या देखो इसमें, तो देखो ray is coming from the denser to rarer, right? This is fact. So definitely I have written here glass denser मतलब glass to ear written. तो sin i by sin r हमने लिख लिया. बट एज यूजुअल हमारा टारगेट इज नॉट टू, हम कभी भी एयर का नहीं फाइंड करते हैं, ऑलवेज वी फाइंड फॉर द डेंसर मीडियम. सो यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम G लिखा तो रिवर्सिबिलिटी किया तो उल्टा हो गया यहाँ पे भी. Here R is nothing. If I take this case, here R is 90 and I is the C critical. बराबर है देखो. So if I use this formula here, then I got this mu. Actually it is mu of G. Is it right? But you know what happened here? अगर तुम बॉक्स में देखोगे सिर्फ म्यू लिखा है तो तुमको समझना इंपॉर्टेंट है कि ये किसी डेंसर के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज एयर का हम कभी फाइंड नहीं करते. दिस इज द फैक्ट. ओके, 1 by sin c. This is very important formula required for us. Is it right? And this is the criteria of the total internal refraction. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, so if I take the example, then you say what? Prism. सबसे बेस्ट. There are so many examples are there. Let me write for you. Number 2, suppose mirage. You know what happened? Mirage is an illusion takes place in the desert. है ना, डेजर्ट में हम जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे नदी है, या सॉरी माय मिस्टेक, वहाँ पे कोई पॉन्ड है, लेक है, बट व्हेन वी रीच देयर वाज नो पॉन्ड. इज इट राइट? तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इल्यूशन. दिस इल्यूशन इज ऑल्सो अ फैक्ट कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इज इट राइट? दिस इज कॉल्ड मिराज, है ना. लूमिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फेनोमेना. लूमिंग मतलब वो भी एक इल्यूशन है, बट दैट टेक्स प्लेस इन द व्हाट, दैट इज इन द कोल्ड प्लेसेस. जैसे हमको लगता है कि टाइटैनिक को डूबने के कारण है तुम्हारा, दैट्स इज इट राइट, लूमिंग. सो खैर फैक्ट नहीं है तुम्हारा, छोड़ दो, है ना. तो मिराज इज एन इल्यूशन, लूमिंग इज एन इल्यूशन. इवन इन द प्रिज्म ऑल्सो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. And you can take one more example. This is very important, that is optical fiber, right? Optical fiber, FIBRE. So optical fiber का explanations बहुत ही simple है. मैं यहाँ पे draw करना चाहूँगा तुम्हारा, right? एक wire होता है. So inside this wire there is no conductor. Number one, there are two different materials are there, right? It is something like of wax. थोड़ा मोम की तरह होता है wax, but it is not the wax. Is it right? So it's a material of wax. दो different होता है, एक का mu1 और दूसरा का mu2. because the ray जब यहाँ से पास करते हैं हम लोग, कोई भी जब एक्चुअली हम लोग EM waves को पास करते हैं और वो रिफ्लेक्शन हो जाता है. देखो रिफ्लेक्शन हो के it's reflected and reach to the other places. So this reflection is only takes place, देख रहे हो तुम, this reflection is only happen when definitely your surrounding medium, तुम्हारा बाहर का मीडियम अगर रेयरर होगा तो. So we have already cleared you that कि रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. So according to your condition here, mu2 is less than the mu1. This is fact, because mu1 मतलब denser medium. So in this way the wave or the ray reach from one point to another in the optical fiber. And in here अगर मान लो ये मैंने यहाँ पे एक सपोज 90 डिग्री में भेजा, तो 90.1 में भी दूसरा रे भेज सकता हूँ, तो दूसरा भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इससे क्या होगा कि दोनों वेव में कभी भी कोलिजन्स नहीं होगा. That is why, right, in optical fiber we can send millions of waves. Is it right? And nobody will collide, no disturbance will be there. That's why we use this concept in the broadband of for the internet and etc. Is it right?
Even in foreign, so they have used for the TV channels also. At a time they can see 500 more than that channel. बट 500 चैनल अगर एक हमारा कंडक्टिंग वायर में जो नॉर्मल वायर में हम लोग यूज करते हैं, देयर विल लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस. इज इट क्लियर? ओके. So next our topic will be the total internal reflection in the prism. Clear?